is wave and matter. ओके, अधिक थोड़ा डेप्थ में जाओ और क्या क्या सीखा है उसमें ड्यूअल नेचर में। अधिक श्रीराम, इट्स सिंपल नो सर, आंसर नहीं है सर, नो सर, डू आई थिंकिंग दैट मच? ओके चलो, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, नेम itself indicating dual nature. Radiation is nothing but light. Radiation but light. Okay. And हम लोग ड्यूअल नेचर किसमें, लाइट में भी पढ़ने वाला है एंड मैटर में भी पढ़ने वाला है, इसी में डी ब्रोगली बोल के आएगा. ओके, लाइट इज it is behaving like two nature, that's why dual nature, right? We know that light behaves like a wave nature, we already studied interference, diffraction, polarization बोल के आपको वेव ऑप्टिक्स में ये सीखने वाला है, right? But now here we are studying particle nature. Light also behaves like a particle nature. That which one major effect is photoelectric effect. ये सीखने वाला है photoelectric effect. And black body radiations का आपको thermal properties of matter में we learned there. So any light is also behaving like both nature, wave nature and particle nature. That's why dual nature. This you already studied. We are studying only in particle nature. We are studying here light behaves like a particle nature. Same way, matter, which we know it is a particle nature, it also behave like a wave nature बोल के डी ब्रोगली ने बोला. And who has proved? Davison and German experiment, they proved that this behavior like a wave nature बोल के, and he got a Nobel Prize for this one. Olden days में जल्दी जल्दी देता है Nobel Prize, but nowadays no one will give Nobel Prize. Okay. तो इस चैप्टर में मेजरली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं. दिस मॉडर्न फिजिक्स वेरी इजी चैप्टर्स. लास्ट में सपोज पीपल विल कम फॉर ट्यूशन, सर आई वांट गुड मार्क्स इन जेईई मेंस में, क्या करेंगे बोलते, फर्स्ट मॉडर्न फिजिक्स विल ट्राई टू फिनिश. सेमी कंडक्टर्स एंड ईएम वेव्स इज ऑल वेरी वेरी स्मॉल चैप्टर्स, मतलब विद इन 2-3 आवर्स बैठे तो हो जाएगा ऐसा पूरा, एंड लेस नंबर ऑफ फॉर्मूलास आर देयर. Okay, done. So now we are studying about the photoelectric effect के बारे में. Okay. See, photoelectric effect actually Hertz and some other persons का वो लोग setup बनाया. They are studying electromagnetic waves का, radiations के बारे में पढ़ रहे हैं. पढ़ने समय they saw some radiations are coming when the light is hitting, radiations are coming बोल के they are something they are doing. They increase the voltage, decrease the voltage, intensity बढ़ता है, so they are seeing. But they did not understood completely उसका calculation part क्या है वगैरह वगैरह, not understood. But this phenomenon completely explained. Who is explained? Who explained this phenomenon? No. Nothing बोलो. Famous person, so excellent person. Who? Maxwell. Einstein, Albert Einstein, very famous person. Okay. He explained. He will always explain. कोई भी हो explain कर देगा ना. He explained completely उसका formula, उसका calculation कैसा है, सब कुछ explain किया, बिठा के सब लोग को, सब दुनिया को बिठा के दिखाया पूरा. Okay. And he also got a Nobel Prize for this photoelectric effect. Okay. We will see. इतना famous effect है उसका. And you tell me, ठीक है, photoelectric effect के बारे में देखो. When the electromagnetic radiations of suitable wavelength, very important, suitable wavelength or frequency or incident on the metal surface के ऊपर एक particular wavelength or frequency incident on the metal surface, then electrons are emitted, electrons are coming out from this metal, and this phenomenon is called photoelectric effect. Photo means light, right? And the electrons so emitted is known as photoelectrons बोलते हैं उसको, photoelectrons, and the current so obtained is called photoelectric current. Okay, so light gira, electrons coming out, and that will producing a photoelectric current. Okay, this effect is called photoelectric effect.
Done? Covered. Now ये photoelectric effect किधर यूज करेगा? Where we use this photoelectric effect? सात्विक बोला. Why this? Where we use this photoelectric? नहीं चलेंगे. अरे ऐसा पढ़ो कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसा किया. Okay, solar panels we are using. Okay, this because of Einstein only we all things all we are using solar panels. तब तक किसी को नहीं मालूम इस photoelectric effect. Okay, so we will see. इसका डेप्थ में जाएंगे क्या क्या होगा. नोट्स अच्छे से लिखो. इससे ज्यादा नथिंग एनी टेक्स्ट बुक एचसी वर्मा में नहीं मिलेगा. ओके चलो now देखो. हाई एनर्जी रेडिएशन शुड फॉल ऑन द मेटल सरफेस. कभी भी आपको हाई एनर्जी रेडिएशन शुड फॉल ऑन द मेटल सरफेस. वो आइंस्टीन ने क्या बोला? लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. ओके, लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स व्हिच इज कॉल्ड फोटॉन्स बोलते हैं. फोटॉन्स. ओके, लाइट आ रहे बोल तो फोटॉन्स आर कमिंग विद द लाइट. ओके, एंड ईच वी कॉल पैकेट्स बोलते हैं, एनर्जी पैकेट्स बोलते हैं. ओके, ईच हैज सर्टेन एनर्जी एंड एनर्जी का फॉर्मूला भी दिया है. उसका एनर्जी का फॉर्मूला दिया है. देखो E is equal to HF. First formula E equal to HC by lambda. Okay, this is the energy of the each photon ka. Where H is what? Planck's constant. We know the value. F is frequency. Lambda is called wavelength. Okay, so high energy should fall on the metal surface. Then only the electrons will come out from the metal surface. Look up. And 6.626 in the number of minus 34 joule second is the formula for this energy. Okay, now tell me, एनर्जी हाई होने के लिए फ्रीक्वेंसी शुड बी हाई और लो ना. फ्रीक्वेंसी शुड बी हाई. एनर्जी हाई होने के लिए लैम्डा शुड बी लो. दैट मींस आई कैन रीराइट द सेंटेंस. हाई एनर्जी के जगह में हाई फ्रीक्वेंसी, इफ द लाइट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस, देन द photoelectrons are coming out. Okay, so लिखो, when a radiations of high frequency and low wavelength is incident on the metal surface, electrons will be emitted. Okay. Because direct relation of frequency and inverse relation with lambda. And SI units of energy here. In our portion में SI units क्या है? SI units of energy is electron volts. Very important. अभी से electron volts पे यूज करने वाला है. Okay, and 1 electron volt is nothing but 1.6 into 10 to the power of minus 19 joules. Very important. देखो, it is like charge of electron only. 1.6 into 10 to the power of minus 19 joules. आपको when are using H में, H is joules में रहेगा, but answer should be in electron volts. That time क्या करना पड़ेगा आपको? Divide with 1.6 10 to the power of minus 19 to get in electron volts. So ऐसा यूज करना पड़ेगा. H बिना H से सब करने समय आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कन्वर्शन. joules to electron volts. You have to divide with 1.6 10 to the power of minus 19. Okay. Now देखो, here what are things are constant? देखो, you know the H value, fixed it. C is the speed of light, right? Speed of light, that is also fixed. 3 in 10 to the power of 8. And if I divide with 1.6 10 to the power of minus 19, we'll get in electron volts. That is also fixed. आपको electron volts में चाहिए. So हम लोग क्या करेंगे, बार बार क्वेश्चंस में आपको HC by lambda से HC से मल्टीप्लाई करने से पहले आपको क्या करेंगे, ऑलरेडी कैलकुलेटर से के साथ H into C divided by 1.6 10 to the power minus 19 करके एक वैल्यू आएगा. That value we have to use that formula. That value कितना होगा? 1240 by lambda should be in nanometers and the energy will be in electron volts. This is the formula we have to use.
एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एक फोटोन का एनर्जी हम टॉकिंग अबाउट, एक फोटोन का एनर्जी इज 1240 when lambda should be nanometers, we have to place here nanometers में electron. अगर lambda is given in angstroms, that time 12400 electron volts. 4 number मैंने नहीं बोल रहा हूँ, 12400 by lambda in angstroms will get energy in electron volts. This is a formula that you use for energy of the photons. So Einstein ने बोला light is made up of particles. Particles बोला photons. Each photon has specific energy. उस energy का फॉर्मूला कितना है? 1240 by lambda nanometers will get energy in electron volts. अगर angstroms दिया तो one more zero add करो, electron volts में आ जाएगा. Actually, if you multiply calculators के साथ 1237.5 आएगा. But actually 1237.5 something आएगा. But 1240 ले रहे हैं. Okay, that is पक्का. मतलब 12. That's why answer में थोड़ा आपको कम वाला में you can put the answer approximate. Okay, मतलब करेक्ट में कैलकुलेट किया नहीं आ रहा ऐसा नहीं है. थोड़ा मिसिंग approximate we have to use all this. 1240 by lambda nanometers energy in electron volts. This is the formula we have to use. Okay. Now आपको फोटोन के बारे में नहीं मालूम. फोटोन फर्स्ट टाइम रीजनिंग, फोटोन क्या है उसके बारे में डिटेल्स में. सो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फोटॉन्स के बारे में उसका प्रॉपर्टीज वगैरह सीखेंगे, देन एमिशन के बारे में सीखेंगे, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसका काइनेटिक एनर्जी कितना वगैरह वगैरह पूरा सीखने वाला है. ओके चलिए, नाउ विल सी द पार्टिकल नेचर, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स. वी आर स्टडीइंग प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स. ओके, फर्स्ट यू नो द पार्टिकल्स ऑफ द लाइट इज कॉल्ड फोटॉन्स. लाइट का पार्टिकल्स है फोटॉन्स. And our energy light is coming, the photons are coming. Okay. Particles of light are called photons. Or energy. Packets or quantum. And mass of photon कितना होगा? Mass of photon rest mass कितना होगा? 0. Okay, so rest mass is 0. तो क्या बोला? The mass of photon cannot be defined in sense of Newtonian mechanics. So वो आइंस्टाइन ने न्यूटन को फोन करके बोला आपका मैकेनिक्स इधर मत लेके आओ, ये पूरा दुनिया अलग है, वो मासलेस वाला पार्टिकल्स के बारे में we're talking about. Okay, the rest mass of the photon is 0. Rest mass, when the particle is moving with some speed, mass रहेगा. Okay, rest mass is 0. And photon travels with what speed? Photon travels with what speed? Light speed only. 3 into 10 power of 8. अच्छा ना? Without talking also you should listen. Okay. So photon always travel with a speed of 3 into 10 power of 8 meters per second, irrespective of frame of reference. कोई भी frame of reference ले लो, speed of photon is always. मतलब see, ऐसा नहीं कि light पहले आया बाद में photon आया, ऐसा नहीं. Light is coming means particles, photons are coming बोल के explaining. 3 into 10 power of 8 meters per second. ओके, नो इसका फोटोन का चार्ज कितना है? चार्ज कितना है फोटोन का? नो ओके, फोटोन का चार्ज है तो उसका चार्ज नहीं है. देखो, द फोटोन इज चार्जलेस, न्यूट्रल. कैसे पता लगेगा? अगर मैं आई पुट एन इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस माइनस, मैं लाइट डालूंगा और साइड से लाइट डाल, photon is chargeless, undeviated in electric and magnetic field. It is not deviating, it is not moving anywhere. So it is chargeless.
Okay. Now, each photon has definite energy. We already studied, and the definite momentum. And energy के बारे में हम मालूम है. Energy का फॉर्मूला क्या था? E equal to hf or hc by lambda, which is simplify किया तो 1240 by lambda in nanometers. We'll get energy in electron volts. This is the energy of the each photon. And इसके पास momentum रहेगा. Momentum formula is mv, mass into velocity. But he already told that Newton ka we should not take, right? So iska own momentum will be given there. Okay, momentum ka formula hai is h by lambda. Momentum of the photon is h by lambda. And de Broglie wavelength किधर से आए? इधर से आए लेके आएगा. Lambda is equal to h by p कर देगा. That is the thing. De Broglie wavelength बोल के आएगा. Formula will be same. This is the momentum of the each photon. Suppose when I put a light, radiations are incident on the light on the surface. Mein, suppose n number of photons are coming. Energy of each photon, you know. How to find total energy? N times the energy photon multiply करने का. वो लिख लो, नोट बोल क्या? Energy emitted is equal to n times that of energy of one photon. Energy of one photon. Total कितना photons आ रहे? That into the energy of one photon क्या था? Total energy is emitted. Okay. Now some questions करेंगे. And you know normally power is equal to energy by time. Basic formula power is equal to energy by time. Okay, these all things in one basically. Okay, question. A 2 milliwatts laser operates at wavelength. So wavelength is given as 500 nanometers. The number of photons n is asking that will be emitted per second. E is how much? Okay, a 2 milliwatts total power. Power watts is power, right? Total power is 2 milliwatts. Okay. Energy, how much energy total energy? From this only total energy we can calculate it. Total energy का formula क्या है? Energy is equal to power equal to energy by time. Energy equal to power and time, right? Time is 1 second per second. So because time is seconds. Time is seconds. Okay. Now total energy calculate. So total energy is 2 into 10 to the power of minus 3. Okay. Watts of joules convert energy equal to 2 millijoules, right? Okay. So 2 into 10 to the power of minus 3 is equal to n times of, we know that hc by lambda, right? Hc by lambda. Because energy of each, energy of each photon. Okay. But here we are using instead of hc by lambda, what we are using? We are using 1240 by, because lambda is nanometers, right? 1240 by lambda use करने वाला है in nanometers. Now use करो and solve. hc by lambda किसी का n times of 1240 by lambda in nanometers. Okay, we get energy in electron volts, right? But either joules है, इधर joules है. We have to convert into the joules. Then only you can cancel. N is there is no units, right? आपको same units में check करना पड़ेगा. So electron volts को joules में how to convert? Into 1.6 into 10 to the power of minus 9. That is important. Now joules cancel हो जाएगा. No solve n value. Lambda कितना 500 nanometers 500 लगाने का वैसे. You have options.
So 5 into 10 power 15. Find the number of 10. Approximately. Okay. In value, if you divide lambda nanometers, you substitute 500. If you divide, you will get 500 per 10. Okay. Sure. Now, next problem. Photons of light of particular wavelength is same, having same energy and same momentum. Why? एक particular wavelength का light is falling on the metal surface. उसके पास energy will be same. Why? Lambda is same. Hc is constant. Energy will be same. And उस photon के पास momentum also be same because h by lambda, right? Lambda is same. So that's why whenever a particular wavelength of light is falling on the metal surface, uska energy of each photon and momentum of each photon will be same. Sabhi ka energy. Okay. And the collisions of the photon with material particle is assumed to be perfectly elastic collision. जो भी hit कर रहा है ना, that we are assuming it is a elastic collision. Elastic collision मालूम है ना? Kinetic energy initial is equal to kinetic energy final, and initial momentum is equal to final momentum. Elastic collision. Then, okay. Now tell me if intensity को बढ़ाया, okay. Now tell me what will happen to the energy of each photon. Intensity मालूम है ना? Metal surface है, intensity को बढ़ाया दो light में, एक छोटा dull intensity, ज्यादा intensity. So what will happen? Energy of each photon. हाँ, सभी बोलो. क्वेश्चन का मेटल सरफेस के ऊपर लाइट जो गिर रहा है ना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर बढ़ गया, व्हाट विल हैपन टू एनर्जी ऑफ ईच फोटोन? इज कैलकुलेटिंग आइंस्टाइन, लिटिल आइंस्टाइन. Forgot that concept. हाँ, Forgot some threshold frequency something to say. नहीं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं. हाँ, बोलो समथिंग. अगर इंटेंसिटी बढ़ाया, ओके, व्हाट विल हैपन टू द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन? इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाया, ओके. एक्चुअली क्या होगा? इट विल रिमेन सेम. देखो, if the intensity of a given wavelength is increased, number of photons will increase. Photons increase होगा, intensity बढ़ाया तो number of photons per second will increase, but the energy of each photon is still same. Energy of the photon will remain same. Okay. So suppose मान लो you have a bulb. Why same? Will see. You have a another bulb with a larger intensity. 100 watts है, ये 200 watts है. कौन सा ज्यादा इंटेंसिटी है? ज्यादा इंटेंसिटी में से 200 watts. ओके. सपोज मान लो इट इज रिलीजिंग 3 photons per second. This light is releasing 3 photons per second. ये कितना होगा? डबल है ना? इसका number of photons will be 6 photons per second is coming. Light is coming. Okay. Now, but both are, I'm taking yellow light, suppose. Both are yellow. मतलब इसका wavelength is fixed ना? If the wavelength is fixed, energy of photon का formula क्या है in terms of wavelength में? hc by lambda. If lambda is fixed, hc already fixed, energy of each photon will be always fixed. So intensity पर depend नहीं होगा. Intensity increase करने से number of photons में increase, but energy of each photon का will be same. Bits में वगैरह ऐसा में पूछेगा. So many questions came. So as intensity increases, number of photons
will increase. Okay, and but energies of each photon will be same. ओके, मेटल सरफेस के अभी तक क्या सीखा फोटोवोल्टिक इफेक्ट में? मेटल सरफेस के ऊपर हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ शुड फॉल ऑन द मेटल सरफेस, देन द इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड. ओके, नाउ दैट हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ बोला ना, ठीक है, दैट इज हाई एनर्जी शुड बी देयर. इनडायरेक्टली वी शुड से हाई एनर्जी रेडिएशन शुड फॉल ऑन द मेटल सरफेस, देन ओनली. मैं टॉर्च लाइट लगाऊंगा सर और इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ रहे, मुझे नहीं दिख रहा है बोलता, ऐसा नहीं. certain wavelengths and certain frequency, मतलब high energy radiation should fall on the metal surface, then only it will kick off the electron. That's why particle nature बोला. Particle nature क्या होगा? Ball, suppose एक stone है, ball जैसे hit किया तो stone will come out, ऊपर जाएगा. That is the particle nature. Light is made up of particles, right? वो particle जाके hit करेगा, then only it will come out. Okay, चलो. That's it. Starting में Newton told particle nature. बाद में Young's double slit experiment, wave optics में पढ़ने वाला है. उसमें they told that it is wave nature. He proved all things. ठीक है, बोला, all सब लोग मान लिया. Normally people क्या, surrounding people whatever this is, okay चलो done, okay. बाद में later on Einstein came. He told it is light is a particle nature. Again confused, अरे wave nature prove कर रहे, particle nature prove कर रहे, but now it will behave like a dual nature. That's why chapter named dual nature. Okay, चलो. Now इसका आंसर बोलो, theoretical आंसर. If the intensity of radiation on the photocell is increased 4 times, intensity को 4 times बढ़ाया, number of photoelectrons क्या होगा? Energy of the photoelectrons emitted become what? Number of photoelectrons क्या होगा? Increase by 4 times. Okay, and इसका energy of photon will remain same. समझ आ रहा है? Yes. So intensity increased by 4 times and energy remains same. Okay, खत्म. Photons का पूरा हो गया. We learned about photons now. Photons, light आ रहे बोलते हो, उसका photons आ रहा है, उसका तरीका देखो. Photons आ रहा है, energy packets आ रहा है. Okay. Now हम लोग क्या करेंगे? Electrons emission के बारे में पढ़ने वाले हैं. Electrons कैसा emit कर रहे हैं, क्या है, we'll see. Okay, चलो. Emission of electrons from metal surface. Okay. Now देखो, the electrons on the surface of the metal are slightly less bonded as compared to electrons in the bulk of metal. आपको जो इलेक्ट्रॉन आके हिट कर रहे हैं ना, वो सरफेस का इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग हिटेड, नॉट बल्क मॉलिक्यूल का. बीच का मॉलिक्यूल इज नॉट कमिंग, बीच का इलेक्ट्रॉन इज नॉट कमिंग, सरफेस का इलेक्ट्रॉन इज कमिंग. व्हाई? देखो, दिस इज मेटल सरफेस. ओके, दिस बीच का बल्क इलेक्ट्रॉन है टॉकिंग. इसके इलेक्ट्रॉन्स में बाजू में सो मेनी एटम्स विल बी देयर. उसके पास न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्जेस आर देयर, वो पकड़ के रखेगा इलेक्ट्रॉन को. सो आपको क्या करेगा? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब कुछ it will attract, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके पकड़ के रखेगा. ये वाला देखो, सरफेस इलेक्ट्रॉन आई एम टॉकिंग अबाउट, इज अ न्यूक्लियस, ये पकड़ के रखेगा. नाउ व्हिच वन इज लेस बॉन्डेड, सरफेस और बल्क का? सरफेस में थोड़े पकड़ के, ये कबड्डी कर रहे हैं, बहुत जन पकड़ लिया इसको, तो थोड़े जन पकड़ रहे हैं, तो क्या होगा? ये लेस बॉन्डेड है. दैट्स व्हाई देन व्हेन द लाइट फॉल्स हिट द मेटल सरफेस, द इलेक्ट्रॉन्स विल जंप आउट. These surface electrons only come out, and that is easily ejected from the metal surface. So this is bulk, this is surface. याद करो, अंडरस्टैंड करो, इजी चैप्टर है, कुछ नहीं. राइट, गिरा, इलेक्ट्रॉन्स कम आउट. ओके, डन. नाउ इलेक्ट्रॉन को एमिशन करने के लिए, हाउ टू एमिट द इलेक्ट्रॉन्स अदर देन photoelectric effect, any other way to eject an electron from the metal surface?
इन वे आपको मेटल सरफेस दिया, उसके ऊपर सरफेस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने का, ऐसे बोलेगा आ जाओ हाँ, then how will you do? वन में दैट इज फोटो इलेक्ट्रॉन से सब मुड़ के लाइट डालेगा ऊपर जा रहा आ रहा है, ठीक है। वन मिलीमीटर और किसका किसका हो गया बोलो स्कूल में जो लेक्चर कहाँ बैठ रहे हैं। ओके चलो, इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए वन इज थर्मियोनिक एमिशन, सिंपली हीट कर, थर्मल मींस हीट। अगर मेटल को आपको हीट करने से इलेक्ट्रॉन्स गेन दैट एनर्जी एंड जंप्स अवे फ्रॉम द मेटल सरफेस, जंप बोल के मैं नहीं रुकूंगा इधर बोल के निकल जाएगा, ओके, दैट इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। सेकेंड मेथड इज फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन में क्या कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द मेटल सरफेस, दिस इज अ मेटल प्लेट, ओके, मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सरफेस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एंड हियर पॉजिटिव प्लेट आई एम गिविंग negative, so electric field is from positive to negative। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाता गया, what will happen, उसके इसके ऊपर force will be acting in the opposite direction, force will be acting in the opposite direction, because of this force electrons will come out from the metal surface, okay। If I go on, this is called field emission, इधर से भी we can remove the electron, दो मेथड है, thermionic emission, field emission, and next one is photoelectric effect। There are three methods we can eject an electron from the metal surface। Okay, then third method will equal photoelectric emission। These are the three methods we are learning। Okay, now I told high energy should fall on the metal surface। If I tell you put, I'll give metal surface high energy डालो बोल तो आपको आप क्या पूछेगा, whether you will ask maximum energy कितना डालो और minimum energy कितना डालो बोल के बोलेगा, कौन सा बोलेगा पहले, high energy should fall on the metal surface, I given metal to you, I told simply high energy डालो बोल के बोलेगा, आप क्या पूछेगा, हाई बोल तो इन्फिनिटी तक किधर किधर कितना सारा कितना हाई, हाई बोल तो कितना बोल तो पूछेगा, दैट मींस यू विल आस्क मिनिमम एनर्जी या मैक्सिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी से ज्यादा बोले तो दैट इज गुड। इफ आई टेल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनीथिंग हाई यू पुट मींस ओके, दैट इज द थिंग, राइट, दैट इज नथिंग बट ए वर्क फंक्शन, ओके, वर्क फंक्शन है, सिंबल है 5, some books में w बोलेगा समथिंग करेगा, बट नो प्रॉब्लम, 5 इज द वर्क फंक्शन, ओके। ये मटेरियल पर डिपेंड होगा, ओके, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रो सरफेस इलेक्ट्रॉन्स is called work function, and this is also energy only, and SI units of this work function is also electron volts, so this is also energy only, phi also something कुछ नहीं है, phi is the energy, the minimum amount of energy required to remove a surface electron is called work function, phi। एंड ये वर्क फंक्शन मेटल टू मेटल वेरी करेगा, बिकॉज उसका बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है, वो थोड़ा हाई एनर्जी चाहिए सम मेटल को, सम लो एनर्जी चाहिए, ओके। एग्जांपल इफ यू सी द सीशियम व्हिच इज 1.9 इज द लीस्ट वर्क फंक्शन, एंड पोटेशियम 2.2 एंड कॉपर 4.5, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स मिनिमम चाहिए टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा भी आएगा बट मिनिमम एनर्जी, ओके, इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। Then okay,
Now tell me, metal surface के ऊपर मुझे work function minimum amount of energy, right? If I given the energy which is greater than work function, whether electrons will come out or not come out? Nothing. If I given the energy which is greater than work function, whether electrons will come out or not come out? Then come out. Come out, right? But either be maybe coming out, maybe. Work function, even then, there is no guarantee of electron emission, as electrons may lose energy while colliding with the ions while coming out. Okay. So, hence, when the applied energy is greater than work function, the electrons may come out. Why? I'll explain. Okay. Now देखो सरफेस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करें, सरफेस का देखो, सरफेस में ऐसा नहीं है टॉप ऊपर लेयर के बारे में, ऐसा नहीं है। सरफेस सरफेस में सम थिकनेस रहेगा, सम थिकनेस। आई एम सपोज मैं ओके, सपोज मान लो आई एम द सरफेस इलेक्ट्रॉन। ओके, गेटिंग स्टक। ओके, देखो सरफेस इलेक्ट्रॉन, मान लो आई एम द सरफेस इलेक्ट्रॉन, मेरे ऊपर मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, मुझे लाइट गिरा मेरे ऊपर। ओके, लाइट गिरा विच इज ग्रेटर देन 5 work function, minimum amount of energy required. So मेरी ड्यूटी क्या है? I want to come up electrons. When I'm coming up, I'm hitting the electrons, right? ऊपर millions of electrons are there. मैं हिट करके बाहर निकलना चाहता हूँ, बट क्या होगा? मेरा एनर्जी इज गेटिंग लॉस्ट, मेरा एनर्जी इज गेटिंग लॉस्ट। ओके, सो दैट एनर्जी लॉस्ट अगर हो गया तो आई कैन नॉट कम बैक, कम अप, राइट? दैट्स व्हाई इट इज नॉट गारंटी बोलेगा। इवन दो देखो, even though no guarantee of electron emission, because as electron may lose energy while colliding with the ions while coming out. मेरे ऊपर आयॉन्स को मैं कोलाइड करके आ रहा हूँ, बट इट एनर्जी इज गेटिंग लॉस्ट, दैट एनर्जी से निकल नहीं पा रहा हूँ। इट इज नॉट गारंटी। देन उसका लिए गारंटी क्या है, कैसा है, विल सी। ओके, नाउ देखो, मान लो E is greater than 5 condition is E is greater, minimum that is required, right? E is greater than 5. Okay, now if electron makes best use of incident light, then comes out with a kinetic energy, some kinetic energy आ जाएगा ना, electrons will be coming with kinetic energy. Now see, इसका kinetic energy कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो। देखो एनर्जी, देखिए एनर्जी एंड वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, राइट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, दिस आल्सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ओके, एंड सपोज एनर्जी lost in collision. Okay, and here I'm talking about kinetic energy of emitted electron. Okay, now I'm giving in all cases में 10 electrons. 10 electrons. 10 electrons. Now work function fixed है, एक particular metal का work function is fixed, and मान लो it is 4 electrons.
इतना एनर्जी यूज करना पड़ेगा हमको सर, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, राइट? नाउ देखो इन ऑल केस में इज ग्रेटर देन 5 और नॉट, इज ग्रेटर देन 5. ओके, मान लो सपोज देयर इज नो कोलिजन, सपोज देयर इज नो कोलिजन, मतलब एनर्जी इज नॉट लॉस्ट इन कोलिजन, जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, zero electron volts, energy is not lost. That time tell me what is the energy coming out from the metal surface. Tell me this much energy is heating, this much energy is used, there is no waste of energy. So क्या होगा, कितना एनर्जी से आएगा? 10 minus 4, 6 electron volts से the kinetic energy of the electron is coming out. Okay, suppose मान लो आपके पास एनर्जी 2 electron volts collision में वेस्ट हुआ. Now कितना एनर्जी से आ रहा है बाहर? टेल में. How much electron volts here? Tell me. 4. 4 electrons. Okay. Suppose मान लो here 5 electron volts है. कितना electron volts? Here 6 minus 1 electron volts. Okay. I am giving 1 electron volts. Okay. I am giving 7 electron volts. Tell me क्या होगा? Collision. Electron में collision में चले जा रहा है, wastage हो रहा है. So I cannot come back. So there is no kinetic energy of electron. देखो, condition E is greater than 5. E is greater than 5. Even though E is greater than 5, it is not guaranteed that electron come out. Okay, because collisions में जा सकते हैं, energy loss हो सकते हैं. That's why Einstein is not bothered about this collisions का थोड़ा energy जाएगा, because एक electron के बारे में नहीं पढ़ सकते ना. That's why he talked about this one. And he has given a formula. Suppose मान लो there is no collision and सबसे ज़्यादा maximum kinetic energy यही है, maximum kinetic energy. Now he has given the formula for maximum kinetic energy, Ke max. Okay, how we got this 6 electron volts? E minus 5. There is no collision, right? This is the maximum kinetic energy, right? E minus 5. So this is the formula we have to by heart. Very important. And this equation is called as Einstein's photoelectric equation. Okay, equation. And because of this writing the equation, he has got a Nobel Prize. ये इक्वेशन लिखने के बाद नोबेल प्राइज आया. नोबेल प्राइज मतलब घर में सिर्फ प्राइज लगा के सोने के जैसे नहीं, सो मच मनी दे लियो, करोड़पति बन जाएगा. ओके, सो this K max का formula E minus 5. This is the kinetic energy which is coming out from the middle surface. That much maximum kinetic energy. मतलब इससे ज्यादा kinetic energy नहीं रहेगा electron के पास. Okay. Einstein's photoelectric equation. आया? चलो. Now ये भी लिखो. So now whenever a photoelectric effect takes place, electrons are ejected with kinetic energies ranging from 0 to max, right? All electrons will not come with Ke max, right? All will come with different kinetic energy. The energy distribution of the photoelectron are shown. देखो energy distribution ऐसा kinetic energy हो रहा है, चेंज होते जा रहा है. मतलब जो भी electrons, some energy will have this many electrons will have this much kinetic energy. This much electrons are having this much kinetic energy. This much electrons will have this much kinetic energy. But देखो only some few are this is which is the maximum kinetic energy. Here, which is the maximum kinetic energy? Maximum kinetic energy will be at the right side or left side or top? Left side. No, देखो kinetic energy is increasing like this, right? X-axis. Okay, x-axis में so these many electrons are having the maximum kinetic energy. Only some electrons will be coming, and most of the energy will be lost because of collisions. Okay. So most these are number of photoelectrons, right? This many photoelectrons are losing some energy, and we are having only less kinetic energy. This is the distribution of the electrons का kinetic energy.
देखो the people are great because इलेक्ट्रॉन्स के साथ खेलना, अंडरस्टैंड करना, हम लोग अभी तक देखा भी नहीं है इलेक्ट्रॉन्स को क्या है, ऐसे पढ़ते जाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कभी देखा है इलेक्ट्रॉन्स को लैब में, दिखा है माइक्रोस्कोप लगा के, खत्म, दैट इज ओनली थिंग, we are always there on, but they will understand very deeper, understand old days there is no technology, but hmm. Stop it. Now देखो, we talk about threshold frequency. Threshold frequency. Okay. Threshold frequency का symbol है F naught. F naught. Self करें. Threshold frequency. Okay. You tell me, the light should fall, the radiation should fall with high energy, right? High energy means frequency should be high or low now? High. If I tell to keep high frequency, what you'll ask? You'll ask maximum frequency or minimum frequency? Minimum frequency. सर इफ आई टेल मिनिमम फ्रीक्वेंसी इतना हर्ट्ज डालो बोल तो उससे एबो वाला आपको लाइट इलेक्ट्रॉन्स विल बी कमिंग आउट, राइट? दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी को वी कॉल एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. लिखो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन बिलो व्हिच फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट पॉसिबल ओनली. मतलब वो मिनिमम से कम डाला अभी इलेक्ट्रॉन्स बाहर ही नहीं निकलेगा. दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इररेस्पेक्टिव ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट. आप लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आप कितना हाई इंटेंसिटी जा रहे हो वो नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन्स. इसका डेरिवेशन भी करेंगे, इसका क्या है बोल के. देखो फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए मिनिमम कंडीशन इज रिक्वायर्ड इज E इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5. ये तो मिनिमम चाहिए. देन ओनली वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो देन ओनली चांस ऑफ कमिंग आउट, राइट? इधर से स्टार्ट करने वाला. ओके, आई वांट इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेट E इक्वल hf. hf is greater than equal to 5. From this f is greater than equal to 5 by h. And what is the minimum frequency in this? Minimum frequency means greater than equal to, na? So equal wala is the minimum frequency, right? Equal to 5 by h. And the minimum frequency को we call as f naught. F naught. Therefore आपको कैसे रिमेम्बर करने का फॉर्मूला 5 is equal to h f naught. ये फॉर्मूला रिमेम्बर करने का 5 equal to h f naught. देखो this is E is equal to hf, right? 5 is equal to hf naught. वर्क फंक्शन ऑलवेज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ नॉट के साथ रहेगा, hf naught. Okay, so this is the formula for threshold frequency. Okay, now our Einstein favorite Nobel equation, photoelectric equation का we are writing. Always we will bring this kinetic energy का. K max का फॉर्मूला क्या है? E minus 5 is the formula for K max. Okay, now I am substituting in terms of this formula. The K max is equal to E का formula in terms of frequency hf and 5 in terms of frequency is hf naught. Right? Now I'm combining, I am writing compare with y equal to mx plus c. So I'm drawing the graph. So here I am putting the y-axis में K max and here I am putting the frequency. K max versus frequency. देखो y-axis में K max is there. Graphs are so important. आपको graph से ही so many questions they will ask. Okay. So y के जगह में K max is there. X के जगह में frequency is there. Okay. And y intercept is negative है ना? So negative आएगा. तो कितना है? hf naught. Negative में है. And ये पॉइंट कितना है? ये पॉइंट कैसा आएगा? इधर K max is 0 or not? In the x axis में y will be 0. इधर K max का जगह 0 रखो. 0 is equal to hf minus hf naught. hh cancel. F is equal to f naught आएगा. So इस point is nothing but f naught. Is f naught. Okay. And since it's straight line, yes, straight line. And slope कितना है? Comparatively, slope क्या था? h आएगा. Slope is equal to h. H. Is it clear? मतलब below the threshold frequency, there is no kinetic energy. Electrons are not coming out. Above only the line, the solid line represents that electrons are coming with some kinetic energy. Okay, so this is a graph we are drawing threshold frequency versus K max versus frequency. So formula कैसा है? Phi is equal to h f naught.
Okay, now question देखो. Okay, now question देखो. Here threshold wavelength भी देखेंगे, then we'll talk about it. Okay, threshold wavelength. Threshold wavelength का symbol क्या है? Anybody? Lambda not. Okay, now tell me, energy, high energy radiation should fall on the metal surface. High energy means wavelength should be less or more? Less. If I tell put less frequency, less wavelength means what you will ask? You will ask the maximum wavelength. You will ask. Then only I will tell maximum wavelength below which you can put any right. That maximum wavelength ko we call as threshold wavelength. Okay. The maximum wavelength of the incident radiation capable of ejecting photoelectrons from the photosensitive surface is called as threshold wavelength, lambda not set. Right. And इधर भी डिराइव करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे और फेवरेट नोबेल प्राइज इक्वेशन वाला भी ऐड करके विल ड्रॉ द ग्राफ. ओके, सो इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए, पर इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए E should be greater than equal to 5. This is a basic condition. And we are writing E in terms of wavelength. Hc by lambda should be greater than equal to 5. And lambda should be, when you send this side, lambda should be lesser than equal to Hc by 5. And what is the maximum wavelength will be? Equal to Hc by 5. Hc by 5. And this is called lambda naught. So how to remember the formula? Phi is equal to Hc by lambda naught. E equal to Hc by lambda, phi equal to Hc by lambda naught. Phi का always lambda naught F naught में आएगा. Okay. Now K max का वाला है. K max वाला. No price equation. K max वाला E minus phi. Now E in terms of wavelength Hc by lambda minus phi in terms of wavelength Hc by lambda naught. Okay, and K max. So now we are drawing the graph versus K max versus 1 by lambda. I'm drawing first. Initially, I'm drawing 1 by lambda is easy for us. Okay. Now compare with the y equal to mx plus c. Y equal to mx plus same thing. Y में K max is there. X में 1 by lambda is there. X में 1 by lambda is there. Okay. Y intercept is minus negative Hc by lambda. So below which it will not come out electrons. And इधर कौन सा point है? Kinetic energy is 0, right? Substitute करो 0. Hc cancel. 1 by lambda is equal to 1 by lambda naught. And इसके बाद since y equal to mx plus c, straight line है. And इसका slope कौन सा है? 1 by lambda निकाल देते तो m के जगह में hc. So slope is hc. Suppose if we want to draw the K max versus lambda only, we'll get exponential decrease. Exponential decrease. Because देखो K max is inverse proportional to lambda. Because ये पूरा work function is constant for metal, so it inverse proportional to lambda. That's why it is a graph exponential graph. Okay. Now I'll ask one question. Okay. How will kinetic energy of the emitted electron be affected by changing intensity of the incident light? I want maximum kinetic energy. क्या होगा if I increase the kinetic incident light? Intensity increase करूँगा. If I increase the intensity, what will happen to the maximum kinetic energy of the emitted electron? I'm talking about. Electron जो आ रहा है ना, उसका kinetic energy maximum क्या होगा? And why also? इंटेंसिटी को मैं इंक्रीज किया. ठीक, के मैक्स का फॉर्मूला E minus 5.
E minus phi. Phi is same for metal. For one metal is the fixed. Energy of each photon क्या होगा? We already studied. As the intensity increases, energy of photon will be same. So Ke max is same. So kinetic energy max intensity problem always कुछ भी increase करे ये पूरा constant ही रह रहा है. Okay. So when I draw the Ke max versus intensity, K max versus intensity, it is a straight line. Does not defect.